start the new topic from today's class, and the topic name is electrochemistry, right? This is what electrochemistry, but so this is very interesting topic, and this is very useful in the regular life cycle of the human beings. So it's a very useful process as well. And if you talk about electrochemistry in O levels, so almost 90%, you can say that 90 to 95% this chapter is actually based on electrolysis, right? It's based on electrolysis, right? This is what we need to learn, right? So we are going to start with electrolysis, right? We are going to start the chapter with electrolysis, right? But so if you talk about electrolysis, so this word is actually composed of two different words. So one is electro and second is lysis. So what is the meaning of electro? The meaning of electro is electricity, and the meaning of lysis actually breakdown, right? So what is the definition of electrolysis now? So this is actually the breakdown of compounds by the passage of electricity. You can say that the breakdown of compounds. This is actually the breakdown of compounds by the passage of electricity, by the passage of electricity. This is what the definition of this word electrolysis means, right? So this is actually the breakdown of compounds by the passage of electricity to produce new substances, This is actually the electrolysis process means. What you need to do, you need to break down the compounds by the passage of electricity, and when you break down the previous one, so it will form new substances as well. So this is what electrolysis means. Is that clear, Bacho? Sir, can you explain it? Yes, this is simple. This is a process in which you are going to break down the compounds. You are breaking down the compounds, and how we are going to break the compounds by the passage of electricity. We need to pass electricity through the compounds. When we pass electricity through the compounds, so they are going to be breaking down, right? When they break down, they will produce new substances. So this overall process is known as electrolysis, right? Okay, sir. Now, Bacho, the thing is that how can we do this, right? The thing is, how can we do this? So for doing this process, we should have apparatus, right? We should have apparatus. The very, very major apparatus for this process is the first thing that you should have is the container, right? You should have the container in which you are going to do this process. Then you should have what? Two solid rods, right? You should have two solid rods that will be like this, right? So we should have two solid rods as well, and then we need to connect these rods with what? With battery, right? So this is what's the apparatus that you need to understand, Bacho. This is the apparatus, right? So the apparatus should have one more thing as well over there, which is known as solution. So we should have solution as well in this container, जिसकी हमें electrolysis करनी है. So this is what the solution that is going to be breaking down and form new substances. So these things are important for the apparatus, right? So what are these things we need to know? This is what the solution, right? This is what the solution, and solution right now known as what? Electrolyte. Electrolyte, a solution known as electrolyte. These rods are important. They are known as electrodes, right? They are known as electrodes, and this one is most important thing to provide electricity to the setup. So this is battery, right? But so these three things are the most important thing of this setup. अब आपके पास कंटेनर नहीं है, बीकर नहीं है आपके पास, आप किसी भी कंटेनर में कर सकते हो, right? You can do this in even the household utensils, right? For example, अगर जिस बर्तन में आप लोग चाय बनाते हैं उस बर्तन को यूज करना चाहिए, you can use this, right? For example, आप कोई भी दूसरी सब्सटेंस ले सकते हैं, जरूरी नहीं है बीकर ही हो, हम कुछ भी सब्सटेंस ले सकते हैं, ठीक है ना? हम उसमें ये प्रोसेस करा लेंगे, right? But electrodes are the most important part. Agar electrodes nahi hai, so how can you provide the electricity to the solutions, right?
For suppose battery नहीं है, तो how can you provide electricity to the process, right? अगर electricity में battery use कर रहे हैं या कोई भी source use कर रहे हैं, for example आप voltage use कर रहे हैं, voltage battery जो होती है या वो नहीं है, तो आपके पास उसके लिए power supply use कर रहे हैं, whatever you have, लेकिन पावर एक सोर्स होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके अलावा अब आपके पास सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, जो कि होना चाहिए वहां पर। अगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती तो कोई भी कंपाउंड नहीं ब्रेक डाउन होगा। So these three things are very much important for this setup. Is that clear, बच्चों? Yes. Now the battery is not a part of our this chapter. We don't need to learn battery for this chapter. We just need to know these two things: what is electrolyte and what is electrode. That's all. So we are going to start with electrolyte. So what is electrolyte means? ये electrolyte है क्या चीज? So why we are using this? Why we cannot simply say it a solution, right? Why we are using the word electrolyte? Why we are using the word electrolyte rather than solution? We are having this in the container. We see this is a solution. Why we are not using the word solution? We are using electrolyte. Why we are saying this electrolyte? Because this is a solution. Definitely, this is a solution, but having one distinct property, right? This is a solution, definitely, but having a property. With the property is actually what? Conduction of electricity. So you can say that solutions that can conduct electricity. Solutions that can conduct electricity are termed as what? Electrolyte. Right, बच्चों? तो जो सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें और जो ना कर सकें। तो दैट इज व्हाई हम इसको सॉल्यूशन नहीं बोल रहे हैं, हम इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन व्हिच इज नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो डेफिनेटली बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रोड्स तक आ जाएगी, बट सॉल्यूशन से पास आउट नहीं हो पाएगी। तो आपका जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब आपका सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपके पास पूरे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, ठीक है ना। सेम एज इट इज फॉर सपोज आपने ये कंटेनर बनाया है, आपने बैटरी को ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू हुई, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आ गई। उसके बाद यहाँ से आगे जाने का जो बैरियर है वो आपने तोड़ दिया, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, सो इट स्टॉप ओवर हियर। इट इज जस्ट लाइक दिस कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो आपके स्विच तक आई, आपने स्विच बंद कर दिया, तो नाउ यू जस्ट स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी ओवर देयर, अब उससे आगे नहीं आ पा रही, ठीक है ना। तो इफ यू वांट कि ये इससे आगे जाए, सो दिस सॉल्यूशन शुड बी इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये मूव करती हुई वापस यहाँ तक आएगी, देन दिस इज अ कंप्लीट सर्किट और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। राइट बच्चों? Yes. Now the solutions that can conduct electricity are electrolytes, right? The solution that can conduct electricity are electrolytes. So for example, what are electrolytes? For example, अगर बच्चे पूछें भाई सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा वाला electrolyte है और कौन सा वाला नहीं, so you can simply say that you know that all ionic compounds are electrolytes in molten and aqueous state, because we learned there's an ionic bonding, that ionic compounds can conduct electricity in aqueous and molten state. So you know this, that ionic compounds are electrolytes. Ionic compounds are electrolytes. Ionic compounds are electrolyte, right? In molten and aqueous state. In molten and aqueous state, they are electrolytes, but in molten and aqueous state. They are not electrolyte in solid state. Keep remember this, right? They are not able to conduct electricity in solid state because they don't have free moving ions, right? And then we also know this, that acids have ions by which they can conduct electricity. So you can say that acids and alkalis, they can conduct electricity in aqueous state, right? So these are actually example of electrolytes. These are the substances that can conduct electricity, right? For example, if you have HCl, if you have NaCl in aqueous, right? If you have HCl in aqueous, for example, if you have calcium chloride in molten state, right? Whatever, these types of things are able to conduct electricity because they are ionic compounds in molten and aqueous state, and they are acids, so they can conduct electricity.
Is that right, every one of you? Yes. Okay, so this is what electrolyte that you need to remember, and the one word is non-electrolytes, right? Non-electrolytes. So what are non-electrolytes? But non-electrolytes are actually the substances or the solutions. Sorry, the solutions that cannot conduct electricity, right? So you can say that solutions that cannot conduct electricity. Solutions that cannot conduct electricity. वो solutions जो कि electricity को conduct ना कर सकें, they are known as non-electrolytes, and they are mostly what? Covalent compounds. They सर are what? जी बेटे. इसमें आपने CaCl2 क्यों लिखा हुआ है? CaCl2 ionic compound है ना? अच्छा, ओके ओके. Calcium chloride and Yes, calcium chloride is ionic compound, and I just also write over there L. That means it is a molten state, right? Yes sir. Covalent compounds. So, for example, if you talk about sugar, bachcho, so sugar is not able to conduct electricity even in gaseous state, in liquid state, or whatever aqueous state. It is not overall going to be conduct electricity. If you talk about ethanol, if you talk about propanol, whatever you have, they are not going to conduct electricity because they don't have free moving ions, right, bachcho? Yes. Yes, Bacho, I just want to ask a question from you. Should I write substances over here? Or solution is fine? Yes, Bacho. मैं यहाँ substances लिख सकता हूँ? सर सिर्फ सॉल्यूशंस. I think both. नहीं, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं? हम इसमें solution ही लिख सकते हैं, हम इसमें substance नहीं लिख सकते. We are not able to write substances over there because it will be wrong, right? अब ये क्यों wrong हो जाएगा? Just look at over here, बच्चों. If you see, so you will find that आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं. एक होता है आपके पास कंडक्टर और एक आपके पास होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट. एक आपके पास होता है कंडक्टर और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट. So you need to keep remember the difference as well. अब अगर किसी लिखने वाले ने इन दोनों को अलग लिखा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों चीजें एक ही हों, ठीक है ना? So they are different things, right? They are the different things, right? So what are the different things, बच्चों? जब कोई substance electricity conduct करता है ना, substance जब कोई electricity conduct करता है तो वो कहलाता है आपके पास conductor. Substance that can conduct electricity. Substance that can conduct electricity. If any substance that Sir. is going to conduct electricity is known as what? Conductor. जी बेटे. सर कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं होता? हाँ, मैं आपको उसमें डिफरेंस नहीं लिखवा रहा, मैं आपको कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना? So those solutions that can conduct electricity are electrolytes, right? This is the difference, right? अगर एक आपके पास अगर कोई एक सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो वो आपके पास होगा कंडक्टर, और अगर कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो वो होगा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? सब्सटेंस से क्या मतलब मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ सब्सटेंस, व्हाई वी आर यूजिंग कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस? इट इज एक्चुअली अगर आपके पास मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, मेटल्स या ग्रेफाइट, अगर मेटल या ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो दे आर कंडक्टर्स, दे आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट, राइट? सर मैं बताऊं क्यों? यस, क्यों? सर ये कंडक्टर सॉलिड्स रहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशंस है, यानी वो लिक्विड्स है. यस, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह समझना चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसा कि बताया किसने, जैसे कि बताया अभी मुझे एक बच्चे ने, तो इस तरह भी आप समझना चाहें तो कर सकते हैं. लेकिन आई जस्ट वांट टू रिमूव योर वन मिसकंसेप्शनल थिंग इज that metals can also be liquid. For example, if you talk about mercury, so mercury can also conduct electricity in the liquid state. So metals भी liquid हो सकते हैं, but the main difference is this: they are elements. They are actually elements.
तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं they will remain same after the conduction of electricity. For suppose अगर आप अपने घरों में तारों को देखते हो तो you are using copper in your wires in your houses, right? In the complete for example 10 to 25 years you are using what copper wire and the wire will remain same in these years, right? It is not changing. पिछले 25 साल पहले भी वो वायर वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था और अभी भी वैसे ही कर रहा है. तो जो उसके अंदर कॉपर लगा हुआ है वो अभी तक खराब ही नहीं हुआ. उसने 25 years अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया but it will remain same. It is remain same and it will be remain same after more 25 years. So you need to understand this कि metals or जो आपके पास graphite है only non-metal which can conduct electricity, they will remain same when they conduct electricity through them, right? Remain same when they conduct electricity from them, right? But if you talk about compounds, तो अगर NaCl में से आपने electricity pass की, so it is going to be breaking down into sodium and chlorine. So it is going to be breaking down into its ions, or it is going to form more other substances, right? Over there, breaking down, right, and form new substances, right? बच्चों. Yes. And one more thing you need to keep remember the difference between these two guys. So this is actually due to the electrons. Electricity conduct by delocalized electrons. In elements, we have delocalized electrons that are able to conduct electricity. But if you talk about compounds, so they have free moving ions. So electricity conduct by free moving ions. So this is the main difference that you need to keep remember in these two things, right, bachcho? जी. For suppose I am setting up two setups over here. For suppose just look at over here, I just use a beaker over here, right? I also use a same beaker over here, right? Same size, same volume, everything is same, right? Same as it is. I am using two electrodes over here. 1, 2, right? I am using two electrodes over here, right? Same electrodes are using over here as well, right? I'm using the same wire to connect them. Like for example, I'm using copper wire for both of them to connect. So this copper wire used to the battery, right? I am using the same voltage battery as well for both of them, right? The solutions are both of them are the same solutions or same setup, sorry. Same setup हमने लगाया है पूरा सब कुछ हमने same लगाया, ठीक है ना? Everything is same. The only thing which I am going to change is solution, right? तो मैं यहाँ ले रहा हूँ बच्चों sodium chloride. I'm using what? Sodium chloride aqueous. और यहाँ मैं ले रहा हूँ बच्चों mercury, right? यहाँ मैंने क्या ले लिया? Mercury, right? So this is the difference over here. यहाँ पर मैंने लिया है बच्चों क्या? NaCl aqueous, right? और यहाँ मैंने लिया है आपके पास क्या? Mercury. The solutions or the electrolytes are different, and we know that both are able to conduct electricity. यहाँ मैंने दोनों में ही क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना? ताकि मैं चेक कर सकूं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट है वो कंप्लीट है या नहीं, ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है या नहीं. So बच्चों, when we pass the electricity, you will see that in both of the cases the bulb light, right? Because the circuit is complete, right? The circuit is complete, right? The bulb light up, right? So यहाँ से electricity pass हो रही है, यहाँ से जो electricity pass हो रही है, it is due to the free ions, right? This is due to the free ions. और यहाँ से जो electricity pass हो रही है बच्चों, it is due to the free electrons, right बच्चों? जी. Now the thing is, this is not electrolysis. This is not electrolysis, but this is electrolysis, right? Why? Because you have mercury, right? You have what? Mercury as a solution, right? This is not even a solution. Sir, This is liquid mercury. जी. सर क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट है तो वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा जी. Yes, same as it is the same reason. We just have element over there in the beaker. This is not solution. This is liquid metal. We cannot further divide it into H and G. We cannot further divide it. Na?
ये ऑलरेडी एलिमेंटल फॉर्म में है, आप इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बट ब्रेक डाउन नहीं होगा. इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सो इट इज एक्चुअली द process in which you pass electricity through the solution and it is going to break down to form new substances. Over here, no new substance is going to be formed because the electrolyte you are using is actually not electrolyte. It is not decomposing. It is already the purest form of the nature element, right? It is element, right? But if you talk about NaCl, so it will break down and form sodium and chlorine, or maybe Yes. hydrogen and chlorine over there. Sodium at cathode. Yes, we will talk about this later on के बनेगा क्या, ठीक है ना. अभी मैं इसको नहीं बता रहा आपको, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपके पास बनेगी अलग अलग. सोडियम टूट कर हो सकता है सोडियम बना ले, हो सकता है क्लोरीन टूट कर क्लोरीन बना ले, हो सकता है हाइड्रोजन बन जाए, हो सकता है ऑक्सीजन बन जाए. वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर but we will discuss it later on. Right now I'm not telling you what is going to be formed. Next class में आप खुद ही बता रहे होंगे क्या बनने वाला है, ठीक है ना. So I just want to show you कि electrolyte क्या चीज है. This is actually electrolyte and this is what कंडक्टर. जी बेटे. सर मुझे समझ नहीं आया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं होता. बेटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा, ये हो रहा है एक्चुअल आपके पास आपने मरकरी लिया है, ठीक है ना. अब जब मरकरी ले रहे हो तो मरकरी तो ऑलरेडी एलिमेंटल फॉर्म में है ना, मतलब अकेला मरकरी ही है ना. उसको आप तो कैसे तोड़ोगे, उसको मजीद क्या तोड़ोगे आप, वो टूट ही नहीं सकता, वो तो एलिमेंटल फॉर्म में, इट इज ऑलरेडी सिंगल. कंपाउंड नहीं है. यस, तो जो कंपाउंड होगा ना वो टूटकर कुछ बना सकता है. एलिमेंट कैसे टूटकर और क्या बनाएगा, एलिमेंट तो ऑलरेडी बेचारा अकेला है ना. समझ आ गई. और एलिमेंट्स ही हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयंस की वजह से करते हैं, ठीक है. जी सर. गैस में सॉल्यूशन कंडक्ट कर सकता है, सब्सटेंस नहीं करता. जिस वजह से क्या करो, उनका इसी वजह से सॉल्यूशन कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट को प्रोसेस कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोलिसिस को, और कंडक्टर सब्सटेंस नहीं कर सकता. सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है बट वो आपके पास जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन में आपके पास आ रहा है, आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि इट शुड बी गोइंग टू ब्रेक डाउन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, राइट. यस सर. ठीक है ना बच्चों, कैन वी मूव. यस सर. Okay, so let's move on towards electrodes. Now what are these electrodes? Okay, ये electrodes क्या चीज हैं. Let's see what does electrode mean. Electrode क्या होता है. Electrode. Now this is actually what it is, actually solid material. It is what it should be, solid material. And the second ability of this should be conductor of electricity, right? It should be conductor of electricity. And what is the purpose of this? The purpose is actually connect battery with solution, right? It connect battery with solution, right बच्चों. सॉल्यूशन से बैटरी को कनेक्ट करने का प्रोसेस एक्चुअली इलेक्ट्रोड है. इलेक्ट्रोड हमारा क्या काम कर रहा है, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है बैटरी, उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों. यस सर. चले अब इलेक्ट्रोड्स की क्लासिफिकेशन. इलेक्ट्रोड की क्लासिफिकेशन की बात करोगे बच्चों आप, तो electrodes are classified on the basis of charges. If you talk about on the basis of charges, so we have two types of electrodes. We have two types of electrodes. Number one, cathode, and number two, anode. We have two types of electrodes on the basis of charge. One is cathode, one is anode, right bachcho. Now for this I just give you two abbreviations that will be easy for you. Cathode, you need to remember this one. For anode, you need to keep remember this one. Now it will be easier for you that what I want to say. What is this? This is national identity card, right bachcho. ऐसे होता ना NIC. Yes sir. But right now this is not national identity card, it is actually negative is cathode, right बच्चों. तो आपने
हमें ये वाला यूज करना है, ये वाला अब से यूज नहीं करना, ठीक है। And if you talk about PIA, so what is PIA? It is not Pakistan International Airlines. It is actually positive is anode, right? Right, बच्चों? So this is the Yes, case sir. that you need to remember. ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। For suppose अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं, तो इस कंटेनर में ये पॉजिटिव वाला इससे कनेक्टेड है, तो it should be positive as anode, और ये नेगेटिव वाला इससे कनेक्टेड है, it should be cathode, right बच्चों? Yes, sir. It should be cathode, it should be anode, right? अगर आप इसके ऊपर वाला देखते हैं तो इसके ऊपर वाला भी ऐसी ही होना चाहिए, positive one is anode and this one should be cathode, right बच्चों? Why I'm just showing you this abbreviation over here, because it is just like a difficulty for you when you talk about cations and anions. If you talk about cations, so these are actually positive ions. These are actually positive ions. If you talk about anions, so anions are actually negatively particles, right? Negatively charged particles. So this is completely opposite. अब यहाँ सर anode आपने positive terminal है और सर आपने cathode इलेक्ट्रोड के नीचे क्या लिखा? electrode के नीचे लिखा है बेटे basis on charge, basis on the charges, right? Classification on the basis of charges, right? So आपके पास दो तरह की जो है क्लासिफिकेशन है। अभी हम चार्जेस वाली क्लासिफिकेशन की बात करें, और कैथोड नेगेटिव होता है, टर्मिनल नेगेटिव है, और पॉजिटिव आयन कैटाइन क्लास है। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने आपको NIC और PIA एब्रिविएशन टाइप याद करने के लिए दिया, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि नेगेटिव इज कैथोड, पॉजिटिव इज एनोड। इससे आपको याद रहेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कैथोड टर्मिनल नेगेटिव है, जबकि कैटाइन पॉजिटिव आयन है, और एनोड टर्मिनल पॉजिटिव है, जबकि एनाइंस जो है नेगेटिव आयंस है। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, जी सर। Yes, sir. We have two more types of what? We have two more types of electrodes. You can say that on the basis of consumption. On the basis of consumption, we have two types of electrodes. One is inert and one is what? Reactive. Inert मतलब ऐसे electrodes जो कि consume नहीं होते, not consume. ये during the electrolysis consume नहीं होंगे, and these are consumable. तो ये सर हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि inert don't take part in the reaction. Yes, they will not take part in the reaction while reactive will take part, right? And inert मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, they are just passing electricity to the solution, that's all. But reactive will take part in the reaction as well. And for the example, you can take platinum electrode or you can take graphite electrode. You can Sir- call this as carbon as well. Or over here in different experiments, we will use different electrodes. जी बेटे, So ये inert की spelling क्या लिखी है आपने? इसकी बेटे Inert के sir? INERT. INURT. INERT. Okay. ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes, sir. जी सर। ठीक है, चलें तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब ये दोनों चीजें हमने बात कर ली हैं, अब हम इससे आगे की बात भी कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्दर अबाउट दिस इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस? मैंने काफी हद तक इसको डिस्क्राइब कर दिया है, बेसिक्स को। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट बच्चों? सर इनर्ट और रिएक्टिव समझा देंगे इलेक्ट्रोड्स? बेटा इनर्ट और रिएक्टिव में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस में इसको हैंग कर रहे होगे ना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो अगर वो इनर्ट होगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बस जो सॉल्यूशन में होगा उसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, वही सब कुछ कर रहा होगा। लेकिन अगर ये रिएक्टिव होगा तो ये खुद भी कंज्यूम होगा, यानी कि रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, ठीक है? ओके सर। चलें अब हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह की जाती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस इलेक्ट्रोलिसिस विद molten solutions because they are easy. So we are going to start with molten solutions. So let's start बच्चों। First of all, the very simple example, electrolysis of molten
NaCl. I'm using molten NaCl, right? NaCl, right? So for this, we need to set an apparatus first, right? So let's see, I am having container over here, right? I just take a container over here like this, right? And then I place 2 electrodes over there, and I am using inert electrodes right now. I don't want कि ये आपको तंग करें, तो मैं reactive electrode यहाँ use नहीं करना चाह रहा. Initially you are new in this chapter, so I'm using inert electrodes ताकि ये आपको disturb ना करें, ठीक है ना? So I'm using inert electrodes, using, we can write using inert electrodes, और using inert electrodes में मैं use कर रहा हूँ graphite के electrodes, electrodes formed by graphite. So these are graphite electrodes. You can even use the name carbon as well if you want to. So you can even say that these are carbon electrodes because graphite is one of the form of carbon. Sir, one more type of inert electrode, platinum भी है ना, metal. Yes, you can even use platinum as well, but platinum and graphite में अगर आप comparison करें, so graphite will be less costly. ठीक है ना? जी जी. So there's a positive and negative. I just connect this with battery as well. And right now I am using a solution over here, which is molten NaCl. Right, Bacho? We are using what? Molten NaCl. Right, everyone? जी sir. So this is the setup. Now I just want from your side, Bacho, कि ये वाला electrode कौन सा है? जल्दी से. This is Anode. yes, positive is anode. Very good. And this one, Bacho? Negative is Cathode. cathode. Cathode, sir. There's a cathode. Very good. Perfect. Now we actually need to know about the ions present in the solution. Yes. Formulae of ions. Which type of ions present in the solution? Tell me, any one of you. कितने ions मौजूद हैं यहाँ पर? Sir, 2 types हैं, एक Na के हैं और Cl के. Yes. We just have NaCl over here. We just have NaCl because it is molten. यानी कि Sir, NaCl के क्योंकि ये अलावा कुछ molten नहीं. है, क्योंकि ये Yes. molten इसमें 2 हैं, अगर aqueous होता तो उसमें फिर हाइड्रोजन भी रहता अलग से वाटर का. यस बिल्कुल ऐसी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अभी मॉल्टन है तो यानी कि अकेले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो NaCl में Na के आयंस होंगे आपके पास, and you should have chloride ion as well, right बच्चों? Is that clear? We have 2 types of Yeah. ions over here, right? And we know that when the electricity is going to pass out, the opposite charges attract each other. The opposite charges attract each other. So you can see this. This is positive terminal. The overall terminal is actually positive, and this will be the negative terminal, right, Bacho? Yes. So all the negative ions present in the solution are going to be moved towards this electrode. So all the chloride start moving towards anode, and all the sodium ions start moving towards cathode. Is that right, Bacho? Sir, जी. जी. Sir, chlorine एक anion है और sodium cation है, right? G. So if you want to define your anode in this way, so you can even define in this way that all the anions are going to be attracted towards anode. That is why it is known as anode, because it is attracting all the anions, right? You can even define your anode like this, right? Yes. Now, bacho, so you are saying, or the diagram is saying that cathode is attracting sodium ions and anode is attracting chloride ion. Is that clear or not? Yes. Yes, can you please Yes. explain it again? Yes, you can see this. Now, opposite charges attract each other. So it is actually all the positive ions are moving towards anode and all the negative ions are moving towards cathode. All the positive ions are actually moving towards cathode and all the negative ions are moving towards anode, right? Or not? Yes, sir. Cathode is always what? It is always about gain of electrons. You need to keep remember कि cathode पे हमेशा क्या होगा बच्चों? Gain of electron, and anode पे there is always a loss of electron, right? और जो gain of electron होता है, you always need to write this on the reactant side. So you need to write all the time electrons at cathode on the reactant side, and over here you always need to write electrons on the product side. So over here reactant side के पास मैंने एक electron लिख दिया और एरो बना दिया. यहाँ पर मैंने एरो बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन लिखना है, ठीक है ना?
So it is showing you the gain and the loss of electron. If you are writing on the left hand side, it is saying that the electron is going to be gain, right? It is going to be add, right? If you are writing on the right hand side, on the product side, so it is like removal of electrons. It is going away from the chloride, right, बच्चों? जी Now सोडियम +1 था, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कैसा हो गया? न्यूट्रल. प्लस माइनस will give you neutral sodium. जी And over here क्लोराइड के पास एक E एक्स्ट्रा plus Cl होगा. yes, उसने लूज कर सिंपल क्लोरीन बन गया. Is that clear, every one of you? Yes. Yes, sir. Now we need to keep remember the periodic table chapter that the group 7 elements are always in diatomic form. They are always in diatomic form. It means तो हमें chlorine- Cl2 लिखना पड़ेगा. Yes, chlorine should be Cl2, and for this we should have 2 chlorides as well, and each chloride when lose 1 electron, so it will be 2 electron as well. Right, bacho? जी. Yes, sir. Now, if you talk about the name of the product, sometime examiner ask in the exam that you need to name the product form. This is what? This is the reaction we did. Now, we are going to write the name of the product. So the name of the product is sodium metal. Right, bacho? And over here, it is chlorine gas. Yes. Right? And examiner can also ask from you about observation. They can even ask about the what you observe at cathode. आपने cathode पे observe क्या करना है? Just look at over here. When the sodium is going to deposit over here, it is going to be like this. The size of the cathode is going to be increased because when metals are going to be moved towards cathode, they just stuck over there. They just you can say that stick over there, Ji. right? So you can say that the size of cathode increases. Size of cathode increases. You can even say that the mass of cathode increases, right, बच्चों? सर जी. अगर इसका इंक्रीज होता है तो एनोड का डिक्रीज होता होगा साइज. नहीं, एनोड पे कुछ नहीं हो रहा है. एनोड पे तो गैस आ रही है ना. एनोड पे गैस फॉर्म होगी, बबल्स आएंगे. So it will be moving from here, ना? It is the gas moving from here. So you एनोड can पे say तो that लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हाँ, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं ना हमारे पास बैटरी की तरफ से. ओह यस यस. सही. तो इस वक्त जो आपके पास क्लोराइड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास जो क्लोराइड है वो खुद अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. वो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रोड पे जाकर वो मूव हो जाता है, पूरा सर्किट बन जाता है. ठीक है ना. क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 क्लोरीन आपस में मिलते हैं, एटम्स जो है ना मिलकर क्लोरीन बना के निकल जाते हैं यहाँ से. सो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन यू विल फाइंड ओवर हियर? यू विल सी दैट the bubbles of yellowish green gas. Bubbles of yellowish green gas. We know that the color of chlorine is yellowish green, so we need to write the color. Bubbles of yellowish green gas. Remember बच्चों, जब कभी भी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, हम कभी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखते. ऑब्जर्वेशन हम सबके लिए एक जैसी होती है. जिसको आता है, जिसको नहीं आता, उन सबके लिए ऑब्जर्वेशन सेम है. So you need to keep remember कि आपने प्रोडक्ट का नाम हरगिज नहीं लिखना. ठीक है बच्चों? जी सर. चलें, इसको जल्दी से अपने पास लिख लीजिए. और मेरी तरफ से आपके लिए एक एग्जांपल ये है कि आपने करके दिखाना है मुझे मोल्टन मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर आपके पास ये सॉल्ट हो तो आप क्या करेंगे? जल्दी से मुझे इसका करके दिखाना है. पहले इसको लिख लें अपने पास एज अ सैंपल, उसके बाद फिर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का करके दिखा सकते हैं.